Hello everyone. In this lecture, we consider the internal architecture of 8086 microprocessor. In the previous two lectures, in the first lecture, we discussed the general purpose registers or the different registers that are used in 8086 microprocessor. And in the second lecture, we described the pin diagram of 8086, in which we explain or we discuss the different signals that are used as a general or in the min mode or in the max mode. Now in this lecture we consider the internal architecture of 8086 microprocessor. Now 8086 microprocessor employs parallel processing. So for the parallel processing, the architecture of 8086 is divided into two parts. One is known as the bus interface unit, that is BIU, and another is the execution unit. Now this bus interface unit will communicate with the external device. So hold the communication with the external device, whether it is a peripheral input output device or the memory, then all the communication is performing by this BIU, that is the bus interface unit, and the execution of the instruction uh, as decoding, execution, doing the arithmetic and logical operation, or all the operation is performing by the execution unit. So all the external communication will be done by the BIU, and all the execution of the instructions is done by the execution unit. So as we see that here, the BIU is used to fetch the instruction, then execution unit is used to decode the instruction and then execute the instruction. Then this is the block diagram of 8086 microprocessor. So this is the BIU, this one. So this is the BIU that include the all the segment registers that hold the starting address of the active segments, that is the extra segment register, code segment register, stack segment register, data segment register. Along with this, it has the IP, that is the instruction pointer, that hold the offset for the code segment. Now in this we have a 6 byte long queue, instruction queue. So this is 6 byte long instruction queue. This BIU will fetch the instruction from the code segment and store that instruction one by one in this queue. This queue is working on the FIFO, that is the first in first out basis. Okay, so this is the BIU and this is the adder. This adder will perform will use to generate the 20-bit address to access the memory or the input output device. This adder will use the segment registers and the registers that hold the offset for that particular segment, and it generate the 20-bit address by using this. As we know that all the registers which are using in 8086 is 16-bit registers. All the registers that are used in 8086 microprocessor is of 16-bit, but this adder will generate the address of 20-bit again by inserting the zeros in the lower side of the segment register, then add the offset to that address to generate the 20-bit. Then we have the execution unit. This execution unit hold the address all the general purpose register, that is AX, BX, CX, DX. Then we have the stack pointer, base pointer, source index register, destination index registers, and then we have the arithmetic and logical units that is used to perform the arithmetical and the logical functions. So this is the whole internal structure or the internal diagram of 8086 microprocessor. Now this is the role of the bus interface unit, and we say that it
is used for the communication with the external devices. So it is used to send out the addresses for the memory locations, and as we know that when we have to access the memory or input output device, we have to send the address to select or to identify that particular location or the input output device. So this bus interface unit is used to send these addresses to identify the particular memory location or the input output device. Then it fetches the instructions from the memory. It read and write the data to the memory. It send out the addresses for the input output ports and read and write the data to the input output ports. That means all the communication with memory location and the input output device will be done by this bus interface unit. Whether we want to read the data, we want to write the data, or we want to fetch the instruction from the memory. So all the communication will with external device will be done by this BIU. Then the execution unit will tell the bus interface unit from where we have to fetch the instruction or the data. Okay, this execution unit tells the BIU from where we have to fetch the instruction or the data, and it decodes the and execute the instructions. The main function of this execution unit is to decoding of the instructions and the execution of the instruction. Now the purpose for dividing the architecture into the two part, or the work into the two part, to speed up the processing. As in 8085 microprocessor, we see that first the microprocessor will fetch the instruction from the memory, then it decode the, then it execute the instruction. So it is the serial case. First it fetch, then it decode, then it execute. But in 8086 microprocessor, when the execution is unit is performing the decoding and the execution of the previously fetch instruction, in the meantime bus interfacing unit fetch the new instructions and store it into the queue, instruction queue. It is more clear in uh, next few slides. So the purpose for dividing the work between the BIU and execution unit is to speed up the processing. So again, this is the BIU and this is the EU. This instruction execution unit also include the instruction decoder. It has the control system. Then this is the registers. This is the segment registers, instruction pointer, and this is the instruction queue. And this is the adder, which is used to generate the 20-bit physical address to access this memory. Now this execution unit has the main component as the instruction decoder, control system, arithmetic and logical unit, general purpose registers, flag registers, pointer and the index register except IP. Because the IP is the part of the BIU, and except IP, all the index and the pointer registers are the part of EU. So they are the main component of the execution unit. So we take one by one. Now instruction decoder. This instruction decoder will decode the instructions that has been already fetched from the memory and stored in the queue. So this EU execution unit will take one by one instruction from this instruction queue, and this instruction decoder decode this instruction. ठीक है, तो BIU क्या करता है कि ये इन कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को यूज़ करके मेमोरी कोड सेगमेंट में से इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है वन बाय वन, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन दिस क्यू. This is the 6-byte long queue. That is, at a time 6 byte of instructions can be stored in this.
ठीक है, तो एक एक करके ये बी आई यू जो है वो एक एक वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को फैच करता है एंड स्टोर इन दिस instruction queue, and this execution unit one by one read the instruction from this instruction queue and decode it and then execute it. So this instruction decoder will read the instruction from the queue and decode the instruction. Meantime, when the execution unit is decoding or executing the instruction that is read from the instruction queue, in the meantime this BIU fetch the instruction from the memory and stored in this instruction queue. जैसे कि हमने इस एग्जीक्यूशन यूनिट ने इस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड कर लिया, तो ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आगे की तरफ हमारी शिफ्ट हो गई। अब जितने टाइम में ये डिकोडर इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है वो इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, उतने टाइम में बस इंटरफेस यूनिट जो है वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगी और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करके इस इंस्ट्रक्शन क्यू में स्टोर कर देगी। तो ये हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग है जिसमें एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट हमारी दोनों एक साथ हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म करती है। देन वी हैव द कंट्रोल सिस्टम। दिस कंट्रोल सिस्टम इज अगेन यूज्ड टू जनरेट द टाइमिंग एंड द कंट्रोल signals to perform the internal operations of the microprocessor. Then we have the arithmetic and logical unit. Again, it is of 16-bit and it is used to do the arithmetic and the logical operations. Then we have the bus interface unit. The main component of bus interface unit is instruction queue, segment registers, and the instructions pointer. Now, main function of instruction queue, as 8086 employs the parallel processing. So when the execution unit is busy in decoding or executing the current instructions, then the buses of 8086 may not be in use because already the instructions are within the microprocessor. So during the decoding or executing, the bus may or may not be in used. So at that time the bus interface unit can use these buses to fetch up to the 6 instruction byte for the following instructions. तो उस instructions के बाद जो हमारी 6 instructions हैं उनको वो fetch कर सकता है और इस queue में हमारा वो stored कर देगा. Now this bus interface is to store this pre-fetched bytes into the queue and this queue is based on the FIFO first in first out basis. ठीक है, तो जब एग्जीक्यूशन यूनिट हमारा प्री फेच्ड इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करने के लिए काम आएगा या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए काम आएगा, तो हो सकता है कि बसेस जो हैं वो हमारी यूज़ नहीं हो रही है ना, कि उस समय हमें कोई भी डाटा को एक्सेस नहीं करना है। ठीक है, तो मीन टाइम बस इंटरफेस यूनिट जो है वो हमारे कोड सेगमेंट को एक्सेस करता है और उसमें से इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है और उस प्रीफेच्ड क्यू में उसको स्टोर कर देता है। इन दिस प्रीफेच्ड क्यू मैक्सिमम 6 इंस्ट्रक्शन बाइट कैन बी स्टोर्ड। तो अगेन जब हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारी क्यू में स्टोर हो जाती हैं, तो जब अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है या एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हमें मेमोरी से एक्सेस नहीं करना है ना, हमें केवल जो है वो बस इंटरफेस यूनिट में जो क्यू है उससे एक्सेस करना है जो हमारी माइक्रोप्रोसेसर के विद इन है। जो हमारा जो फैचिंग का जो टाइम है वो हमारा फिर रिड्यूस हो जाता है, वो हमारा बच जाता है। तो ये हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है जिससे कि हम स्पीड अप कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस को। सो दिस EU इज रेडी फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इट सिंपली रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्यू। So this is also known as the pipelining. Pipelining means the EU of 8086 do not have to wait in between for the BIU to fetch the next instruction from the pipe. उसने पहले इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके एग्जीक्यूट कर लिया, अब उसे ये वेट नहीं करना है कि बस इंटरफेस यूनिट जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, है ना, क्योंकि बस इंटरफेस यूनिट जो है वो ऑलरेडी उन इंस्ट्रक्शंस को फैच करके अपनी क्यू में स्टोर्ड कर चुका है। ठीक है,
तो इसका मतलब जो हमारी क्यू, द प्रेजेंस ऑफ द क्यू इन 8086 स्पीड अप द प्रोसेसिंग। ठीक। सो द फैचिंग ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वाइल द करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इज कॉल्ड द पाइप लाइनिंग, है ना, कि एक पाइप जैसी हमारी इंस्ट्रक्शन क्यू है, उसमें हमने इंस्ट्रक्शंस को फैच करके पहले से ही स्टोर कर दिया है। तो फैचिंग ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वाइल करंट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटिंग इज कॉल्ड द पाइप लाइनिंग। सो 8086 माइक्रोप्रोसेसर इज used on this concept। ठीक है। सो दिस इज द होल आर्किटेक्चर ऑफ 8086 microprocessor। So when you are asking to draw and explain the internal architecture of 8086 microprocessor, then you have to explain all this which we explained in this lecture, and also explain the things which we explained in the first lecture. That means you have to start from drawing this architecture diagram, then told that the internal architecture is divided into two parts, that is the bus interface unit and the execution unit. Then tell the concept of dividing the instruction, dividing the architecture into the two part. Then then explain the main purpose or the main role of bus interface unit and the execution unit, then the instruction queue, you know, pipelining, then the instruction decoder control system. Then also you have to explain these registers also, what are the role of these registers and the flag registers. So these registers are explained in the first lecture. So the combination of the first and this lecture till now, you have to write when you are asking to draw and explain the internal architecture of 8086 microprocessor। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है कि उसको हमने दो यूनिट्स में डिवाइड किया है, बस इंटरफेस यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, और फिर उसमें जितने भी हमारे कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं उनको आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। इसका इन सब रजिस्टर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि हाउ वी जनरेट द 20 बिट एड्रेस टू एक्सेस द मेमोरी। आपको एक्सप्लेन करना है कि इस इंस्ट्रक्शन क्यू का क्या रोल है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर का क्या रोल है, कंट्रोल सिस्टम का क्या रोल है, what is the role of this arithmetical and logical unit. So all you have to explain when you are asking for the internal architecture of 8086 microprocessor। Clear? Now next we consider the addressing modes. Now as in 8085 microprocessor we also study the addressing modes. So the addressing modes are the different ways in which we can provide the data to the processor, or in which the processor can access the data. So addressing modes are different ways in which the processor can access the data. So that means this data is available in different places, and how the processor will access this data, that way is defined as the addressing mode. Now in 8086 microprocessor we use 8 addressing modes. One is the register addressing modes, immediate addressing modes, direct addressing modes, register indirect addressing modes. These 4 registers are same as we study in 8085 microprocessor. Now these 4 modes which are used in 80, specifically in 8086 microprocessor, that is used how we generate the effective address. Effective address means the address which is used to identify the memory location or the input output device from which we microprocessor has to read or write the data. So we start with one by one. So we start with the register addressing modes. So in 8086 we can perform the operation on 8-bit data as well as on 16-bit data, as we know that 8086 microprocessor is 16-bit microprocessor.
तो इसमें हम 16 बिट डाटा के ऊपर भी ऑपरेशन कर सकते हैं और 8 बिट डाटा के ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं. सो इन द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स द डाटा और द ऑपरेंड is placed in one of the 16 bit or the 8 bit general purpose registers. ठीक है, as we know that instruction has the two part, one is the operand and another is opcode. Operand is the data on which operation has to be performed, and opcode specify the operation which we have to perform. So in this case, move is the opcode and the operand is stored in one of the 16 bit or 8 bit general purpose register. So if we use the 16 bit general purpose register, so we have to put the X, or if we use the 8 bit general purpose register, so either we use the L or H, lower register or the higher register. So in this we have to move the contents of register C to the accumulator. So in this we use the X, so that means 16 bit data will be moved from the register C to the register A or the accumulator. So in this 8 bit data will be moved from the lower register B to the lower register of accumulator. So in the register addressing modes, the operand is in one of the 16 bit or 8 bit general purpose register. Then we have the immediate addressing modes. In immediate addressing mode, the 8 bit or 16 bit data can be specified as the part of the instruction. ठीक है, so 8 bit और 16 bit data can be specified as the part of the instruction. इसका मतलब ये डाटा हमारा कहीं पे स्टोर नहीं होता, डायरेक्टली हम इस डाटा को अपने इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करते हैं. तो अगर हम 8 बिट के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 8 बिट डाटा राइट करेंगे एंड देन हियर वी राइट द 8 बिट रजिस्टर. सो इन दिस वी हैव टू मूव द इमीडिएट data 45 into the accumulator lower register. Again in this 8086 we use the same move instruction for the register addressing mode and the immediate addressing modes. And as we see in 8085 we use the move for the register and we use the MVI for the immediate addressing, but here the move is used in both the cases. This 45 will be moved in lower accumulator register. Then in this 16 bit data will be moved in the BX register. So in the immediate addressing modes, the 8 bit or 16 bit data is specified within the instruction. Then we have the direct addressing mode. Direct addressing modes means the operand offset, because here we have to only define the offset. So the operand offset is given in the instruction as a 8 bit or 16 bit displacement. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो ऑपरेंड का जो ऑफसेट है वो डायरेक्टली हम इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड करते हैं. अब यहाँ पर जब हमें ऑफसेट को रिप्रेजेंट करना है तो दैट एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ब्रैकेट. तो अगर हम ये ब्रैकेट में कोई वैल्यू रखते हैं तो दैट मीन इट स्पेसिफाई द एड्रेस और द ऑफसेट, और अगर हम बिना ब्रैकेट के ये वैल्यू रखते हैं तो इट इज़ द डाटा. ठीक है, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन है कि हम डाटा लिख रहे हैं या एड्रेस लिख रहे हैं. तो अगर हम इसी के आगे एक ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये हमारा एड्रेस बन जाएगा. ठीक है, सो दैट्स फॉर एग्जांपल वी हैव द ऐड AL देन कॉमा देन दिस एड्रेस 0301H. so this is the offset, this is the offset of the data. Now data is stored in data segment or in the extra segment, है ना. So this is the offset of the data segment. So if the address of data segment is stored, as we know that the address of data segment register, data segment is stored in the data segment register DS, then the microprocessor will first generate the 20-bit address to access that data segment memory location from the combination of DS and this offset.
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 बिट फिजिकल एड्रेस विल बी जनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ DS एंड दिस offset. Then the microprocessor will read the 8-bit data from that memory location, that is in the data segment, and perform the addition with the contents of the accumulator lower register, and the result is stored itself in the accumulator lower register. क्लियर है? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? So in this, first of all we have to generate the physical address by combining the DS, that is the data segment register, and this offset plus this offset. तो इससे हम जो है वो फिजिकल एड्रेस जनरेट करेंगे, और दिस फिजिकल एड्रेस से हम उस 20 बिट एड्रेस जनरेट करके उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे जहाँ से हमें इस डाटा को रीड करके एक्यूमुलेटर के लोअर रजिस्टर के साथ हमें ऐड करना है। ठीक है। सिमिलरली वी कैन परफॉर्म फॉर द 16 बिट। सो इन दिस आइदर वी राइट हेयर और हेयर द वैल्यू इज सेम, है ना। जैसे हमने इसमें एड्रेस जो ऑफसेट है वो हमने यहाँ लिखा है, ऑफसेट को हम ये इधर भी लिख सकते हैं। पहले हम ऑफसेट लिख लें फिर हम एक्यूमुलेटर, लेकिन मीनिंग हमारा वही सेम रहेगा कि इन दिस वी हैव टू ऐड द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम दिस ऑफसेट टू द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर, है ना। अब यहाँ पर हमारा जो है वो 16 बिट डाटा है। यहाँ पर हमारा जो एक्यूमुलेटर है वो 16 बिट का है क्योंकि हमने X यूज़ किया है। तो लेकिन हमारा जो एक मेमोरी लोकेशन होती है उसमें 8 बिट डाटा स्टोर होता है ना। तो इसका इस इंस्ट्रक्शन के लिए हमें दो कंज्यूकेटिव मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना पड़ेगा। एक हम करेंगे 0301 ऑफसेट मेमोरी लोकेशन को, और दूसरे हम करेंगे 0302 मेमोरी लोकेशन को। दो कंज्यूकेटिव मेमोरी लोकेशन को हम एक्सेस करेंगे। इसके कंटेंट्स को हम एक्यूमुलेटर के लोअर रजिस्टर के साथ ऐड करेंगे, इसके कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर के हायर रजिस्टर के साथ ऐड करेंगे, एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर इटसेल्फ। तो यहाँ पर हम 8 बिट एड्रेसिंग 8 बिट डाटा के ऊपर भी ऑपरेशन कर सकते हैं और 16 बिट डाटा के ऊपर भी ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हमारा क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इन द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द ऑफसेट इज प्रोवाइडेड इन द इंस्ट्रक्शन। तो ऑफसेट और डाटा में यही डिफरेंस है कि हमें यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज़ करना है, तो वो हमारी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से आ जाएगा। नाउ वी हैव द रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग। In this, the offset of the operand is placed in one of the registers. Either we use the BX, base pointer, and the source and the destination index registers. तो इन चारों में से कोई सा भी एक रजिस्टर को हम यूज कर सकते हैं to store the offset of the operand, and then this register is used in the instruction. Again, now these registers are used to carry the address or the offset of the data. So when we use these registers in the instruction, we have to put the bracket along with this. So if we put the bracket along with this, that means the contents of BX is not the data, it is the offset of the data. ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब सिंपल है कि वी हैव टू मूव द कंटेंट्स ऑफ BX टू द एक्यूमुलेटर। इसका कंटेंट्स जो हैं वो BX के जो कंटेंट्स वो हमारा डाटा है, लेकिन अब हमने यहाँ पर इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया, है ना। तो ब्रैकेट लगा दिया, डेट मीन्स द कंटेंट्स ऑफ दिस BX इज नॉट द डाटा। अब ये डाटा नहीं है, ये क्या है, दैट इज द ऑफसेट ऑफ द डाटा। तो दैट मीन्स अगेन बाय यूजिंग दिस वी हैव टू कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस बाय यूजिंग द डाटा सेगमेंट रजिस्टर एंड द ऑफसेट BX, then we access that memory location. Again this is the 16 bit डाटा हमें यूज़ करना है क्योंकि X हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो X हमने यूज़ किया तो 16 बिट के लिए हमें दो कंजुगेटिव मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना पड़ेगा, और उसके मेमोरी लोकेशन के जो कंटेंट्स हैं उसको हम एक्यूमुलेटर के रजिस्टर्स के साथ ऐड करेंगे और रिजल्ट हमने स्टोर कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली इस इंस्ट्रक्शन में क्या है, द ऑफसेट इज स्टोर्ड इन द SI, and in this ALE is used, that means we are using only the 8 bit
operation on the 8 bit. So in this we have to access only the single memory location whose offset is stored in the SI. So these are the four addressing modes which are also used in 8085 microprocessor. Now next addressing modes are used depending on how we generate the effective address or the offset. Now in the base addressing mode, the offset is the sum of 8 bit or 16 bit displacement and the contents of the base register and the base pointer. जैसे हमने यहाँ का बेस, तो इसमें हम बेस रजिस्टर को यूज़ करेंगे या बेस पॉइंटर रजिस्टर को यूज़ करेंगे, है ना, अलोंग विथ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है कि जो हम डायरेक्टली ऑफसेट जो है वो इस रजिस्टर के साथ हम राइट करेंगे. सो इन दिस केस द ऑफसेट इज इक्वल टू द कंटेंट्स ऑफ द बी एक्स एंड 8 bit or 16 bit displacement. As we say that like this example, move al bracket bx plus 05. So in this we use the 8 bit offset. Suppose the contents of bx is 0301. ठीक है, then this 05 will be added to this, so the offset now becomes 0306h. So this is the actual offset of this. Now this offset is used to calculate the 20-bit physical address along with the data segment register. Then that memory location will be accessed and the contents of that memory location will be moved to the lower register of the accumulator. Similarly, we can use the 16-bit displacement. So in this 0301 will be added with 1346. Then the offset will become 0301 plus 1346. Then that offset will be combined with the data segment register to generate the 20-bit physical address. Again we have to move only the 8-bit. अगर यहाँ हमारा h होता तो we have to move the 16-bit from the two consecutive memory location. Then we have the indexed addressing mode. As we say the indexed, so in this we use the index registers. So index registers are of two types, SI source index or the destination index. So here the offset will be the contents of the source index and or the destination index plus 8-bit or 16-bit displacement. ठीक है, तो यहाँ पर हम अगेन वही सेम चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं. तो 8-bit हमने यहाँ पर एड्रेसिंग यूज़ किया है, सॉरी 8-bit डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया है, यहाँ पर हमने 16-bit डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया है. अब यहाँ देखो दोनों में हमने x लिखा है, इसका ना दोनों केस में हमें दो कंजुगेटिव मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि हमें 16-bit डाटा को एक्सेस करना है. देन वी हैव द बेस इंडेक्स एड्रेसिंग. तो इसमें हमने क्या किया, बेस प्लस इंडेक्स, है ना. तो इज दिस द ऑफसेट इज द कंटेंट्स ऑफ द बेस एंड द इंडेक्स. So it is the base register or the base pointer register and the index register, that is the source index and the destination index. So the offset is either the contents of bx or bp plus the contents of si or di. So this can be written like this, bx plus si. Though the offset will be calculated from the contents of bx and si, then it is again used with data segment register to generate the 20-bit physical address. Again we have to access the two consecutive memory location because we have to perform the operation on 16-bit data. Then we have the base index with displacement. So here the offset will be the contents of the base register plus the source and index register plus 8-bit और 16-bit displacement. तो इसमें हमने तीनों चीज़ों को यूज़ किया, बेस रजिस्टर्स को भी, इंडेक्स रजिस्टर्स को भी और डिस्प्लेसमेंट को भी. तो इट विल बी द कंटेंट्स ऑफ बी एक्स, कंटेंट्स ऑफ एस आई, देन 8-bit डिस्प्लेसमेंट, देन हियर वी यूज द 16-bit डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो जो जितने भी रजिस्टर्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे सारे 8086 माइक्रोप्रोसेसर में जितने भी रजिस्टर्स हैं वो हमारे 16-bit रजिस्टर्स हैं, है ना. सो दीज आर द
addressing modes which are used in 8086 microprocessor.